elaborate, Lord, this bill has been discussed. Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture, हस्बा बिल का जो केस था इस केस से ज़रा इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है, ठीक है। अब वो पहले फाइल हुई पिटिशन या बाद में फाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट, तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए। हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था, ठीक है। तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है, ठीक है। तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी ज़रूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया। अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया। अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये आइन से तसादुम रखता है। ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए। मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं। आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी। हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली। माय लॉर्ड, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई दी area which is within the jurisdiction of this honorable court. Trichotomy जो है, that is being, as a matter of fact, negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, executive, parliament, and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your दे दीजिए। मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है। तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते हैं, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आर्मी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? देख सकती है, तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही। नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी। मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज raised by certain
नहीं वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात। अब वो आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज यही होते हैं है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये फिर हल नहीं है इसका। आप फिर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम से आ जाए तो ठीक है। आप कहते हैं हो ही नहीं सकता है, फुल स्टॉप। देखिए चाहे परमीमी तरमीम करो या आप कानून को मैं ये गुजारिश करूं, इस वक्त ये इनेक्टमेंट जो है एक्ट 17 ये इन क्वेश्चन है जी। अब ये कि आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या करती है और किस तरह से कानून साजी करती है, ये तो सवाल आएगा एट द टाइम व्हेन द सर्टेन लेजिस्लेशन दे आर बाय द पार्लियामेंट। इस वक्त तो इस इनेक्टमेंट के हवाले से मैं बात करता हूँ कि इसमें आपकी इंटरनल वर्किंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और उसके अलावा आपकी जुरिस्डिक्शन 184(3) और उसमें ऐड कर दी गई अपील भी। तो ये और आखिर में जब ये कहा गया कि कोई कानून, कोई प्रेसिडेंट, कोई रूल, कोई रेगुलेशन किसी तरह से भी ये जो एनेक्टमेंट है इसको अफेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मैंडेट से निकलकर जुडिशरी का जो डोमेन है उसके अंदर दाखिल हो गए। सो माय सबमिशन। अगर आप एक बात पे मजीद रोशनी डालना पसंद फरमाएं। जी जी। जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं, ये अदालत की आज़ादी अज खुद एक नायाब चीज़ है या अदालत की आज़ादी लोगों के लिए होती है, लोगों के इख्तियारात के लिए होती है? इसलिए अदालती आज़ादी क्या खुद एक, जैसे अंग्रेजी में कहें, स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट है जिसको हमें हर हालत में उसका दिफा करना चाहिए, या अदालत की आज़ादी को इससे दिफा करना चाहिए? क्योंकि अगर अदालती आज़ादी नहीं होगी तो अवाम व ख़ास के जो मसाइल हैं उनको आज़ादाना तौर पर नहीं सुना और तय्युन किया जा सकता है। तो आप सिर्फ रुक रहे हैं एक बात पे, अदालत की आज़ादी, मगर आप उसको जोड़ नहीं रहे हैं आगे वाली बात को। तो या तो कहें कि हाँ अदालती आज़ादी खुद ही एक है, उसका मौक़िफ़ उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरा सवाल, आप बात समझ गए? इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल समझ गया। मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अदालत बजाते खुद अगर फ़र्ज़ करे तश्कील दे दी जाए और उसकी जो फंक्शंस हैं उसके साथ जो रिलेटेबल एरिया है वो अगर उसका हिस्सा नहीं बनता, और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ को एनफोर्स करने के हवाले से, तो दैट इज़ द इंटेंशन लेजिस्लेचर सो फार एज 184(3) इज कंसर्न। सो मेरी गुजारिश है, मैं समझा नहीं जवाब आपका क्या है, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कह रहा हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस जो है, नहीं अदालती आज़ादी खुद ही हदफ है या कोई और भी मतलब इसका होना चाहिए? मैं ये गुजारिश करूँ कि अगर मुझे इजाज़त दें तो फिर मैं इसको एक और पैराए से आपके सामने रखता हूँ। हाँ देखिए, आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डिफाइन करता है और उसमें जुडिशरी नहीं है। इसी तरह स्पेसिफिकली 184(3) जो है जिसमें 199 की वर्च्यूज भी बाकायदगी से मौजूद हैं, इन दोनों को अगर देखा जाए तो फिर ये एक जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू की जो है वो क्रिएट होती है फॉर द पर्पस ऑफ लुकिंग। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अगर कल पार्लियामान ने कानून बनाती है कि बेवाओं को के केसेस को तरजीह दी जाएगी, ठीक है, ये पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है जब तक आप इसकी ज़ारा वजाहत ना कीजिए। या तो कहिए जी हाँ ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे जिसको तरजीह देना चाहें। इस वक्त जो आपके सामने इशू है, नहीं, ये मैं आपसे सिर्फ समझना, सिर्फ आप आज़ादी अदलिया की बात कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि इसको आप उसके साथ जोड़ नहीं ले रहे हैं कि लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के नुकसान के लिए। तो फिर तो समझ जाएगी कि अगर लोगों का नुकसान हो रहा है, हम इधर बैठे हैं लोगों को केस करने के लिए ना। तो अगर कोई चीज़ रास्ता हमवार कर रही है या रास्ता रोक रही है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, तब तो आप दलाइल दें। मगर आप सिर्फ कहें क्योंकि ये वो पामाल कर रही है पार्लियामान अदलिया का, तो बस यही ख़त्म, इसी पे कानून दम तोड़ देगा।
कि जब हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, नहीं ना कीजिए ना, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप कह रहे हैं ये सिर्फ खुद ही काफी है या इसको जोड़ना है किसी चीज से, ये बताइए। ये मैं गुजारिश करता हूँ, यही तो मैं अर्ज करने, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेरे साथी ने मुझे रोक लिया, मेरे साथी ने मुझे ही रोक ये लिया। सारी बातें हो चुकी हैं पहले तारिक साहब के होते हुए, ये सारी डिस्कस कर चुके हैं, उनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिए, उनसे जवाब आ भी जाएंगे। आप अपनी जो पिटीशन है 20 उसके हवाले से आपने बता दिया कि फलां 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 जो ये सेक्शंस हैं ये एटावारीज, यही कह रहे हैं ना? जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए अपनी पिटीशन के हवाले से। अभी जवाबात की तरफ ना जाइए कि आप क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब उसको छोड़ दीजिए, वो जवाब वो देंगे तो देख लेंगे। आप अपनी जो पिटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर आर्गुइंग बिफोर अस, उसके बारे में बात कर लीजिए बस, ठीक है? मैं ये गुजारिश करूं कि बुनियादी तौर पर जो सवाल, जो पॉइंट्स मैंने एजिटेट किए हैं ये और जो सबमिशन का हिस्सा ही हैं, अगर इजाज़त दें तो ये मैंने इसको मुख्तलिफ जो इसके डिपार्टमेंट्स या कंपार्टमेंट्स हैं उसमें रखा, वो बात करके उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा कपल ऑफ पैरास फ्राम ए के ब्रोहिज बुक द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके मुख्तलिफ हवालों से, अमेंडमेंट के हवाले से उन्होंने क्या कहा। आई विल बी जस्ट मेकिंग अ सबमिशन ऑन दैट। जजमेंट्स, माय लॉर्ड, इफ योर लॉर्डशिप मे जस्ट परमिट मी, 2A के हवाले से बेसिक फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पे ये अब कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट बन चुका, वो बेसिक फीचर्स जो हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, ये सारा, और ये इस सिलसिले में मैं PLD 1992 सुप्रीम कोर्ट 595 इसका सब हेड B है सर, पेज 596 एंड सब हेड M पेज 604, और उसके बाद 2015 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1739, इसका सब हेड जो है D है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे सर। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे मैंने आर्टिकल 239 का हवाला दिया कि ये बार करता है ऐसी लेजिस्लेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट और उसके फंडामेंटल्स के खिलाफ हो, एज आई सबमिटेड लॉ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे मैंने जो जजमेंट्स देखी आपकी इजाज़त से, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी, 2000 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 751, देन PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 105 एंड PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 869। आइटम 55 जो हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, 4th शेड्यूल में, लॉर्ड, शेड्यूल का हिस्सा है फेडरलिस्ट का, लेजिस्लेटिव का, आइटम 55 जहाँ एनलार्जमेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पे तस्करा है, लेकिन ये जो इनेक्टमेंट है इसने सुप्रीम कोर्ट के, मैं ये कहूँगा कि मुकम्मल पर सलब किए हैं इख्तियारात और उसको अपनी गर्दाब में ले लिया है, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी मैनर। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 ऑलरेडी मैंने मेंशन किया, इसका सब हेड O है पेज 409 पे, सब हेड R है
पेज 412 पे। ट्राइकोटमी पे, सेपरेशन ऑफ पावर, ALD 2010 सुप्रीम कोर्ट 265, इसका रेलेवेंट है सब हेड A एंड C। एक्सेस टू जस्टिस पे PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट सब हेड C, पेज 1202। पेज कौन सा बता रहे हैं? PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट 923 सर। E सब हेड। Intents of the framers of the Constitution, ये जजमेंट 1992 1992 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1202, इसका रेलेवेंट सब हेड है C। Interpretation of Constitution approach in different judgments, where they say Constitution to be read as a whole, not one part. ये PLD 1999 Supreme Court, page 57, इसका relevant subhead है H. Then same PLD 1999 Supreme Court 888, इसका ये भी 99 सुप्रीम कोर्ट है। जी that's correct my lord. 888 जी इसका at page 905 subhead H, already PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 रेफर किया है, इसका सब C at page 598, and again PLD 1992 Supreme Court 595. Lord, I'll be just reading a couple of paras with your permission. ये मैंने एक फोल्डर आपके लिए भी ये जरा दे दीजिए। इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं? नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स, जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दे। सब बड़ी मेहनत की आपने जी, आप माशाल्लाह, आपकी तवज्जो के लिए से। नहीं शुक्रिया। अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये पेज 14 पे पैरा 10 है, इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है, सफा बता दें। 14A 14A। 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है, 14 के बाद 15 है, 14A मेरे पास नहीं है। ये पैरा 10 है, जरा देखिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है, शायद रह गया हो। पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। पैराग्राफ 10 मिसिंग है, आपने 14A इसमें रखा नहीं, मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथी के पास है। किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए। चलिए, वो रह गया है, तो वो वाला जगह एक सफा रह गया है, ये मैं दे दूंगा। ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं। आप जरा माइक के करीब आ जाए, चौधरी साहब माइक के करीब। 27 पे, हाँ 27 है, पेज 23 पे। हाँ जी 23 पे जी फरमाइए।
ये है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया। The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर। 23 पेज पे 23 लास्ट पैराग्राफ, 23 और लास्ट पैरा। ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है, ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं। द जुडिशरी डिपार्टमेंट प्रॉपर power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose restraint upon the legislature power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया 28 पावर टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का, द जुडिशरी डिपार्टमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़, जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट टू डिटरमिन वेदर अ स्टैट्यूट बी और बी नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटरमिन। ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है। ये बिल्कुल वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड। चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा। चौधरी साहब, आप मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट, उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया बीच में, हम तो फिर आप वो चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने। साहब, वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर, जी जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त, जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था। जी दुरुस्त। क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? कि with the passage of time, definitely, what already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958. जी जी। This book predates martial law. It was, I think Broi Saab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. That's correct. It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ, आप जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए। ये ब्रोई साहब की बात नहीं है, ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. जी अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लॉ की इस्तिलाहात हैं। वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के ये
उधर भी trichotomy of power, separation of powers is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने as a matter of fact we Calling regarding it, government capital C, the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words, he is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume so and so, Philadelphia. अब बुनियादी तौर पे उन्होंने अमेरिकन जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चॉइस साहब, बिकॉज इज कोटिंग समवन ना, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. बट ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था टू एलैबोरेट द concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉज जो है ये मेडिसिन वाला बेसिकली हमारे पास इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी. पैरा 28 जो है, Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट. When the courts of law hold certain laws to be unconstitutional, their declarations cannot be construed as defeating the will of the people as expressed in the legislatures of the country. From what has been said so far, it would be apparent that the legal sovereign That ordains and establishes the Constitution is the people. But this term ought not to be confused with the people as the voters who have returned their representative to act as legislators. The people as a historic community must be distinguished from people as a community of the entire living population with their presidents and predecessors and successors. The people acting solemnly and deliberately, says Professor Willoughby in his book, The Constitution of the United States, in their sovereign capacity, declare that certain matters shall be determined in a certain way. These matters, because of their great and fundamental importance, they reduce to definite written form and declare that they shall not be changed except in a particular manner. In addition to this, they go on to say, in substance, that so decided is their will and so maturely formed their judgment upon the matter, any act of their true will. Therefore, when the courts declare void legislative acts inconsistent with the constitutional provisions, the judges are giving effect to the real will of the people as they have previously solemnly declared. Thus, in effect, the declaring law and constitution, the judges are administering the real will of the legal sovereign, will which, having regard to view that they take impugned law, has been thwarted by the representative of the people considered as a historic community. My submission is very respectfully, basically, in this para, the will of the people, that is what is preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Sir, if I may ask you a question, the question here is, I think, of legislative competence. It's not perhaps how quote-unquote good or quote-unquote bad this law is. The question that is perhaps agitating the petitioners, from what I have understood from your submissions, you as well, is there legislative competence? If the answer is there is legislative competence, then the matter proceeds in one direction. But if the answer is there is no legislative competence, well, then that ends the matter. As you are well aware, the technical term, and I'm emphasizing this is the technical term of art used in constitutional law, that where a legislature, federal, provincial, doesn't matter, tries to make a law beyond its competence, the technical term is that it is a fraud on the Constitution.
Those are very strong words. So here we have to focus, and this is perhaps what you are trying to tell us. If I'm trying to understand what you are saying, that it matters not whether this is a quote unquote good law, whether it says that the Supreme Court should give priority to this class of case or that class of case or whatever else that you may say or Parliament may in future say. The question is, does Parliament have the legislative competence to regulate the Supreme Court in this manner? इसमें एक सेक्शन है, वो आपने अभी हमें पढ़ा नहीं हमारे सामने. I think it is section 7. Section 7, sir, I just referred to. वो जो है, अब देखिए ना, अब ये अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको इतराज है अटॉर्नी जनरल आगाज करें बात का, हाँ या ना? सवाल आपने नहीं सुना था? हाँ सर वो कर ले तो फिर बस ठीक है, यही पूछा ना. अभी और आप बहस ना कीजिए ना. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज है उनके बहस करने से, तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं. नहीं, वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल को अगर उसको अलहदा सुनिए. दोबारा आपने बात शुरू कर दी वही. My Lord, if I may, my Lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view. I think then he can. आप किधर से हैं? My Lord, I am for 19. My Lord, I was not here last time. I was abroad, so. तो आपने इसको अहमियत नहीं दी? No, my Lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my Lord. आप किसके लिए हैं? My Lord, petitions. नाम बताइए किसके लिए? Mudassir Hassan, my Lord. कौन है मुदस्सिर हसन? He is a lawyer, my Lord. He is a petitioner. किधर है, दिखाएं उनको. My Lord, today he has, my Lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. हाँ, तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं. एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर, इनको जितना शौक इस केस का नहीं है. My Lord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? My Lord, maybe at your Lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my Lord. नहीं, नहीं, मुख्तसर. हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं है. मुख्तसर बात कर लें तो कर लें. My Lord, I would. अच्छा, आप करना चाहते हैं. और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same submission, I have a petition number 33. अगर आप प्लीज बता दें, आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को? If I am allowed to argue first, my Lord. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं. चलें, आ जाइए. आप जी चौधरी साहब बताइए. CP20 सर. नहीं, आप पहले बहस करना चाहते हैं? मैं कुछ अच्छा, आप किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजुल्लाह न्याजी पेटिशनर है, मौजूद है. कौन है? वकील हैं? He is an advocate and former president of the Islamabad High चलो, Court. आप सीनियर हैं, आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 में. CP20. I've already filed concise statement, my Lord. And ठीक. concise statement. 20 एक से इनकी निकालने पिटिशन. Concise statement is 8279, my Lord. CP20. ये अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको इतराज है अटॉर्नी जनरल आगाज करें बात का, हाँ या ना? सवाल आपने नहीं सुना था? हाँ सर वो कर ले. तो फिर बस ठीक है, यही पूछा ना. अभी और आप बहस ना कीजिए ना. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज है उनके बहस करने से, तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं. नहीं, वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल को अगर उसको अलहदा सुनिए. दोबारा आपने बात शुरू कर दी वही. My Lord, if I may, my Lord, I have to argue if Attorney General may be requested to argue after all the petitioners have argued their point of view. I think then he can. आप किधर से हैं? My Lord, I am for 19. My Lord, I was not here last time. I was abroad, so. तो आपने इसको अहमियत नहीं दी? No, my Lord, actually I was already traveling. It was fixed on a Saturday, so my Lord. आप किसके लिए हैं? My Lord, petitions. नाम बताइए किसके लिए? Mudassir Hassan, my Lord. कौन है मुदस्सिर हसन? He is a lawyer, my Lord. He is a petitioner. किधर है, दिखाएं उनको. My Lord, today he has, my Lord, called to Peshawar. He has a case in Peshawar. हाँ, तो देखिए ये तो अहमियत आप दे रहे हैं. एक दिन वकील नहीं है तो दूसरे दिन वो पिटिशनर, इनको जितना शौक इस केस का नहीं है. My Lord, because this was fixed. आप कितना वक्त लेंगे? My Lord, maybe at your Lordship's discretion, half an hour to 30 to 60 minutes, my Lord. नहीं, मुख्तसर. हाफ एन आवर वाले इतने लंबे नहीं है. मुख्तसर बात कर लें तो कर लें. My Lord, I would. अच्छा, आप करना चाहते हैं. और पिटिशनर की तरफ से कौन है? Of the same submission,
I have a petition number 33. अगर आप प्लीज बता दें, आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को? If I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, चलें आ जाइए। आप जी चौधरी साहब बताइए। CP20 सर। नहीं, आप पहले बहस करना चाहते हैं? मैं कुछ अच्छा, आप किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? न्याजुल्लाह न्याजी पेटिशनर है, मौजूद है। कौन है? वकील हैं? He is an advocate and former president of the Islamabad High चलो, आप Court. सीनियर हैं, आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP20 में। CP20। I've already filed concise statement, my lord, and ठीक, concise statement. 20 एक से इनकी निकाल दें पिटीशन। Concise statement is 8279, my lord. CP20. ये जी, Lord, if I'm permitted, My lord, if I may, प्लीज। Lord, I will just be reading the Act 17, my lord, before I submit my चौधरी साहब, अब आप पूरा ना पढ़िए, हम पूरा एक्ट पढ़ चुके हैं। उसका अगर आप एक शिक पढ़ना चाहें, उसको बहस करना चाहें तो कर दीजिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका जो ओपनिंग पैरा है, अगर इजाज़त दे, क्योंकि वो क्रक्स है उस सारे इशू का जो बुनियादी तौर पे इस एक्ट का हिस्सा है। So I would, may I, my lord? बिस्मिल्लाह कर लीजिए, शुरू कीजिए। Whereas Article 191 of the Constitution provides that subject to the Constitution and law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the Supreme Court. And whereas Article 10A of the Constitution mandated right to fair trial and due process, Article 4 of the Constitution guarantees treatment in accordance with law, and Article 25 of the Constitution prohibits the with Article 191 of the Constitution, the law is being enacted. And whereas it is expedient to make law providing for certain practices and procedures of the Supreme Court, my respectful submission is, this para, as a matter of fact, indicates that this law is being enacted for a certain purpose, maybe for specific purpose, and I may say person specific, purpose specific, and maybe time specific as well. Very respectfully, if I'm permitted. You are implying words in it, or does it say so? Lord, it says. It says so. Lord, it says so, it means it. Where it is say so, it's for a person. Now, let's not include words in a statute which don't exist. If that is your impression, say it, that is my impression. That is my impression. So the law doesn't say this. Lord. So, all the sections which are part of this Act 17 of 2023, I would go to Section 3. Any matter invoking exercise of original jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution shall be first placed before the committee constituted under Section 2 for examination, and if the committee of the opinion that a question of public importance with reference to enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1, Part 2 of the Constitution is involved, it shall constitute a bench
not less than 3 judges of the Supreme Court of Pakistan, which may also include the members of the committee for adjudication of the matter. Regarding this section 3, my submission is basically the legal authority already being part of the 1980 Supreme Court rules. This section, as a matter of fact, has been introduced by the Parliament, and I would respectfully say this is an encroachment on the area which falls within the jurisdiction, within the legal framework, I must say. So this is being in conflict with separation of power theory. My submission is this conflicts, and this is ultra vires, my lord, so far as this section 3 is concerned, my lord.